Assalamualaikum everybody. So today's video is about crochet. That is my new hobby. I had a lot of free time, so I wanted to take a new hobby. So I found this crochet and it's totally awesome. It's a little bit difficult, but it can be handled very goodly. So I'm going to teach you how to make a lavender flower. It's super cool and it's really fun to make it and then give it to someone like your mother for Mother's Day. But you know, everything has a start. So when I started crochet, this was my first ever crochet I made, so it's a beginner friendly. But as you can see, there were some faults, but after like practice I got it right. So let's start. So what you're gonna need is some yarn. You can take any color you want, it's your preference, but I'm going to take this hot pink color because it's really cool. So this is your yarn. You're gonna need some sharp scissors to cut it. Then some hook. I'm using this 3. This one, this side, that is 3. And then you're gonna need some straws or sticks. Like I used here a stick, then I colored it green, or you can paint it green, or you can use yarn to cover it up. But I prefer, like green straws because it's much easier to use. So let's get started. So I'm gonna just clear up the table. Gonna take my yarn needle or hook. Then you're gonna take this end. As you can see, this is the end. You can take 2 fingers because 1 finger is a little bit hard to do. You're gonna take your yarn and put it like this. Then use your thumb to hold the yarn there. So this end where it's cutted, you have to put it there. And then make a cross like this. When you've made a cross, you can just put it under your pinky to take, to have a little bit of support so it does not go. Then take your finger and you have to take this yarn from under and pull it. And as you can see, you have got something like this. Now hold it from here and slowly close. Make it tight. And you see you have got a knot. Now what you do is, if you pull these two, जब आप पुल करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा और आपने अपना हुक लेना है. मैं 3 यूज कर रही हूँ, तो हम इसके अंदर 3 डाल देंगे और इसे टाइट कर देंगे. अब इसे कहते हैं आई थिंक सो स्लिप नॉट. ये स्लिप नॉट होता है, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा. एक मैजिक ट्रिक होता है, मगर इसके लिए हमें स्लिप नॉट चाहिए. बहुत आसान है. If you want me to show it again, you can just play it again. Now what you're going to do, there are many ways to hold your hook. So मैं तो यूज करती हूँ नाइफ की तरह, जैसे नाइफ कटिंग के लिए, कटिंग, use your hook like a knife, or maybe you can use it like a pencil, okay? So I'm very comfortable with using it as a knife. Now there are many ways also to hold your yarn. I use it like this. What you do is take your yarn and roll it over, and then like this. What you do is take your yarn like this, hold it between your pinky, then go up, then this is your index finger, roll it over, and there you go. Now you do is the other yarn that is cutted, you hold it on, and there you go. This is how you hold your yarn, and how to control the tension is that you move your index finger to control it. Now we're going to do a single stitch. crochet में इसे single stitch कहते हैं. अब ये कैसे होता है? अब मैं एक टर्म यूज करूंगी, yarn over. अब कंफ्यूज नहीं होना, जब मैं कहूंगी yarn over, इसका मतलब है कि आपने अपना hook लेना है. You have to take your hook and rotate it this way. Okay? What you have to do is take this hook, rotate it here, then slowly pull down and from there. मगर कुछ वक्त क्या होता है कि डिफिकल्टी होती है इसमें से गुजारना, तो आप अपनी फिंगर को थोड़ा हल्का छोड़ोगे तो ये आराम से नीचे घुस जाएगा. ओके, नाउ अब मैं उर्दू में बताती हूँ क्या करना है. जब मैं yarn over जब मैं बोलूँगी, इसका मतलब कि आपने ना हुक लेना है, इस तरफ रोटेट करना है, जहाँ पे आपकी फिंगर है उस तरफ आपने रोटेट करना है, और फिर इसको पीछे लेके जाना है. yarn के पीछे लेके स्लोली से करना और अपनी फिंगर को थोड़ा हल्का छोड़ना ताकि वो गुजर जाए उस होल के अंदर से. ये आपकी होगी 2 स्टिचेस. अब ये देखिए, ये 4th स्टिच थी, ये 2nd स्टिच है. नजर आ रहा है? Like that. So you have 2 stitches. Now if you want to make a smaller
like this one, a little small, then you have to do 48 stitches. Like these, you have to do 48. Or if you want to make a bigger one, that is one palm or your middle finger, the length of your middle finger, then you have to do 100 stitches. So let's do 100 stitches, and I'm going to show you. I'm going to do with slowly so you can see. Okay, yarn over means to rotate your hook towards your finger, then back at the yarn, and then slowly pull it down through the hole. That's it. That's your third stitch. Again, yarn over to pull, and there. Now you see, you will have some difficulty at the first. Your stitches might be like uneven. Okay, so I'm going to show you one more time. So when I say yarn over, जब मैं कहूँगी yarn over, तो क्या करना है? Needle को आपने अपने finger के पास लेके जाना है. You have to take your needle and pull it towards your finger, push it, and then go back your yarn. फिर अपने yarn के पीछे जाना है. अब ये ऐसे curve हो जाएगा. फिर आराम से इसे नीचे लेके जाना है. नीचे ले जाओ और इस जो hole है ना, इसके अंदर चले जाना है. Now I'm going to show you one more time. So guys, I've done my all. Just I'm going to show you the last stitch I'm going to make, so you're, again, if you have confusion, you can clear it up. जब मैं कहूँ yarn over, मतलब कि yarn ऐसे करना है और नीचे लेके आना है आराम से. फिर टेंशन को थोड़ा सा हल्का करना है. टेंशन आपकी फिंगर से कंट्रोल होगी. और अगर आपकी टेंशन थोड़ी ख़राब है ना, जैसे मेरी थोड़ी सी हो जाती है कभी कभी, मतलब आपको पता है ना, इंसान है हम, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है साइज़ में. कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटा हो जाता है बहुत ज़्यादा. तो ऐसे ही देखें 100 बन जाता है. ये आपको इतना बड़ा हो जाएगा 100 के लिए. ये पूरा 100 स्टिचेस है, तो आपका फ्लावर इतना बड़ा बनेगा. अगर आपको और बड़ा चाहिए, आप स्टिचेस बढ़ा लें, या अगर आपको कम चाहिए तो आप स्टिचेस कम कर लें. रेडी? सो yarn over, again yarn over, yarn over, again. You also have to keep count how many stitches you are doing, because if you're not keeping count, then you may end up having a lot of stitches or a little stitches than 100, but it's totally up to you. You want 100, 200, it's up to you how much big or small you want your flower to be. So I'm thinking of making a bouquet of these flowers. That's why I'm taking the same color, and as you can see, I've completed 100 stitches. Okay, so guys, this is the next step. When have you done your 100th stitch and you still have to put your hook inside that stitch? Now what you're going to do is we're going to work in the next stitch. The next stitch I'm going to show you with another needle. This is another hook. And as you can see, this is the stitch we were working in, this one. The next stitch is this one. You have to put your hook in that. So I'm just going to put it in. Now you're gonna yarn over, keep your take a little bit down, and then you're gonna go in that stitch, this one. It's a little bit hard when you get in it, and you see now you have how many stitches? You have now 1, 2, 3 stitches. Now you're gonna again yarn over and pull that, and you see you have 1, 2, 3, again 3 stitches. Now you're gonna yarn over again, it's like this, and go through the first 2 stitches. Don't go through the last one, just pull through the first 2 stitches. It's going to be a little hard because it's getting tighter, so you just want to like that, but and there you go. Now you have how many stitches? 2 stitches you have. You're gonna pull over, yarn over, and pull through that 2 stitches. This is called like a triple stitch, like that or something. Now you see you have a little bit hole over here. You have to go through that hole again, but before, yarn over, go through that same stitch, and yarn over again,
अब फिर आपके पास आ जाएगी 3 स्टिचेस। अब 3 स्टिचेस है, फर्स्ट जो 2 फर्स्ट स्टिचेस है ना, उसके अंदर आपने उसके उसके अंदर से आपने पुल थ्रू करना है। तो yarn over, pull through the first two, थोड़ा सा हार्ड होएगा क्योंकि फर्स्ट स्टिच थोड़ी सी हमारे पास तंग है। See, it's a little bit hard, so what you're gonna do is first loosen that stitch, like pull your, yeah, like that, and then you go through these two, and there you go. You have now 2 stitches. अब आप फिर से yarn over करेंगे और उसके अंदर से जाएंगे। अब आप ये 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 टाइम्स कर सकते हैं। उसी उसमें से मुझे ज़्यादा होता है कि 4 टाइम्स, क्योंकि जब आप देखें ये चीज़ हम बना रहे हैं, इसको आपने स्टिक करना होता है ये स्ट्रॉ के ऊपर या स्टिक के ऊपर। तो जब आप स्ट्रॉ के ऊपर करोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एरिया चाहिए होगा, इसलिए मैं इसको 5 टाइम्स करती हूँ। जो मैंने ट्यूटोरियल देखा था ना, उसमें उन्होंने 3 टाइम्स किया था, तो मैं 5 टाइम्स ज़्यादा मुझे सही लगता है। So what you're gonna do is yarn over, go through that same stitch. अब देखिए यहाँ पे होल बना हुआ है, उसके अंदर चले जाए। Now you have 3 stitches. You're gonna yarn over, pull through the first, and now you have 3 stitches. You're gonna yarn over the first 2 stitches. It's a little bit of uneasy. Now you have 2 stitches left. You're gonna yarn over again and through. अब एक और दफ़ा आपको दिखाती हूँ और थोड़ा सा ओरिजिनल एक्सप्लेन करती हूँ। या हमने पुल ओवर yarn ओवर किया इस होल में। अब आपको नज़र आ रहा है ये होल बहुत अच्छी तरह से, इसके अंदर हमने डालना है yarn ओवर करके। अगर आपको yarn ओवर निकल रहा है तो आप थोड़ा सा हाथ उसके ऊपर रख लें, फिंगर रख लें और अंदर लेके जाना है। अब देखिए 1 2 3 स्टिचेस हो गई। yarn ओवर, फर्स्ट स्टिच से आपने निकाल उसके पुल थ्रू करना है। अब आपके पास कितनी होगी? 3 स्टिचेस, 1 2 3। अब आपने फर्स्ट जो 2 है ना, फर्स्ट 2, उसके अंदर से आपने yarn ओवर करके पुल थ्रू करना है। थोड़ा सा हार्ड होएगा मगर टेंशन ना लें, थोड़ा सा आप जोर लगा लें यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ही होता है, टाइट ज़्यादा हो जाती है। ये हमने किया 2 स्टिचेस में से। अब हमारे पास आ गए 2 स्टिचेस। अब इसमें से भी हमने करना है, तो हम yarn over and that's it। अब आपके पास आपने 3 करनी है, 4 करनी है, 5 करनी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 4 की है। सो अब हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे। इसके बाद आपके पास ये वाली स्टिच आती है जो मैं आपको दिखाती हूँ। So guys, what you have to do is take this stitch. So you have only one over here. You're gonna go inside that stitch. So that is a little bit, it's going to be a little bit hard, but don't worry. It's going to be all right. Yeah. Now you're inside that stitch, the next stitch you were supposed to go. Now you're going to do is yarn over, okay, yarn over and go through that stitch. Now you have 2 stitches. You're going to make it 1. By how? You're going to take this stitch, this first one, and pull through the second one. And that is, you got your 1 stitch. Now you're going to do 6 single stitches. That means you're going to yarn over, that is 1, yarn over again, that is 2, yarn over again, the third, फिर fourth में yarn over, fifth yarn over, sixth yarn over, and that is your 6 complete stitches and it will look like a chain. अब क्या करना है? अब ये है कि आपने ये लेना है और देखिए अब यहाँ पे होल बन गया है, वही स्टिच, मतलब कि यहाँ पे एक होल सा बन गया है, मतलब ये स्टिच है। आपने ये जो आपने yarn over किया था ना लास्ट में, उसको इस हुक को उसके अंदर डालना है। That will go through that and now you have 2 stitches on your hook. You're gonna yarn over, pull through that stitch, फिर भी आपके पास 2 stitches आ रहे हैं। अब आपने इसको 1 stitch बनाना है। अब आप क्या करोगे कि ये yarn over करके and there you go. ये आपका फर्स्ट पेटल टाइप बन गया है, जैसे ये आपका फर्स्ट ये चीज बन गई है। अब मैं एक उर्दू में समझाती हूँ, फिर नेक्स्ट वाला मैं आपको इंग्लिश में समझा दूंगी। सो फर्स्ट यू गोना डू इज ओके। अब नेक्स्ट स्टिच हमारे पास ये है, तो हमने इसके अंदर घुसाना है, मतलब उसके अंदर डालो। अब आपके पास 2 स्टिचेस आ गई हैं। अब नाउ लुक केयरफुली, अब आपने yarn over करना है
उसको नीचे लेके और ये आपके पास 2 स्टिचेस आ गई, मगर आपने इसको 1 स्टिच बनानी है। आपने ये फर्स्ट वाला को लेना है और सेकंड के अंदर डालना है, तो आपके पास बन गई 1 स्टिच। अब आप इसको, अब आपने 6 सिंगल स्टिचेस बनानी है, मतलब ये आपने बनाना है 6 मगर। तो 1, ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे थोड़ी सी वो जो स्टिच हमने जिसमें बनाया था ना ये 6 सिंगल स्टिचेस, आपने उस, so guys what you have to do is take the next this stitch, so you have only one over here, you're gonna go inside that stitch, so that is a little bit, it's going to be a little bit hard, but don't worry, it's going to be all right. Yeah, now you're inside that stitch, the next stitch you were supposed to go. Now you're gonna do is yarn over, okay, yarn over and go through that stitch. Now you have 2 stitches, you're gonna make it 1 by how you're gonna take this stitch, the one this first one, and pull through the second one, and that is, you got your 1 stitch. Now you're gonna do 6 single stitches, that means you're gonna yarn over, that is 1, yarn over again, that is 2, yarn over again, the third, फिर fourth में yarn over, fifth yarn over, sixth yarn over, and that is your 6 complete stitches and it will look like a chain. अब क्या करना है, अब ये है कि आपने ये लेना है और देखिए अब यहाँ पे होल बन गया है, वही स्टिच, मतलब कि यहाँ पे एक होल सा बन गया है, मतलब ये स्टिच है। आपने ये जो आपने yarn over किया था ना लास्ट में, उसको इस हुक को उसके अंदर डालना है, that it will go through that, and now you have 2 stitches on your hook. You're gonna yarn over, pull through that stitch, फिर भी आपके पास 2 stitches आ रहे हैं, अब आपने इसको 1 stitch बनाना है। अब आप क्या करोगे कि ये yarn over करके, and there you go, ये आपका फर्स्ट पेटल टाइप बन गया है, जैसे ये आपका फर्स्ट ये चीज बन गई है। अब मैं एक उर्दू में समझाती हूँ, फिर नेक्स्ट वाला मैं आपको इंग्लिश में समझा दूंगी। सो फर्स्ट यू गोना डू इज, ओके, अब नेक्स्ट स्टिच हमारे पास ये है, तो हमने इसके अंदर घुसाना है, मतलब उसके अंदर डालो। अब आपके पास 2 स्टिचेस आ गई हैं। अब नाउ लुक केयरफुली, अब आपने yarn ओवर करना है, उसको नीचे लेके और ये आपके पास 2 स्टिचेस आ गई, मगर आपने इसको 1 स्टिच बनानी है। आपने ये फर्स्ट वाला को लेना है और सेकंड के अंदर डालना है, तो आपके पास बन गई 1 स्टिच। अब आप इसको, अब आपने 6 सिंगल स्टिचेस बनानी है, मतलब ये आपने बनाना है 6 मगर। तो 1, ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे थोड़ी सी वो जो स्टिच हमने जिसमें बनाया था ना ये 6 सिंगल स्टिचेस, आपने उस, so guys I've closing up, so we're going to go in that next stitch। अब हम next stitch में जा रहे हैं, हमने next stitch पे करना, अब आपने yarn over करना है, you have to yarn over, now you have these 2 stitches। अब आपने क्या करना है कि ये सिंपल है कि आपने फर्स्ट स्टिच को लेना है और दूसरी स्टिच से पुल थ्रू कर देना है, ये एक स्टिच बन जाए। ओके, नाउ यू हैव टू मेक 6 सिंगल स्टिचेस। अब 6 सिंगल स्टिचेस हम बनाएंगे, तो ये हमारे पास 1 स्टिच हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास 6 आ गए। अब देखिए यहाँ पे जो हमने सेम स्टिच बनाई थी ना, उसमें थोड़ा सा हमें नजर आएगा कि होल आ रहा है, उस होल के अंदर हमने डालना है थोड़ा सा ऐसे। अब आपने yarn ओवर करना है, 4 स्टिच से पुल थ्रू करना है, अब 2 स्टिचेस रह गई। अब हमने ये जो 4 स्टिच है इसे पकड़ना है और पुल थ्रू करना है सेकंड स्टिच से, तो हम ऐसे, ये हो गया।
अब एक और एक दफ़ा दिखाती हूँ, फिर नेक्स्ट हम करेंगे pull, go through the next stitch, pull through the first, दो आ गई, अब take the first and pull through the second, और ऐसे कभी निकल भी जाएगा मगर प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने से उसके अंदर डाल लो। ये आपके पास दो स्टिचेस आ गई, इसको पकड़ो और there you have one stitch. Now make 6 single stitches. 1 2 3 4 5 6 6 सिंगल स्टिचेस हो गई। अब आपने सेम उसी के अंदर डालना है, देयर यू गो, और यहाँ से पुल yarn ओवर करना है, yarn ओवर कर लिया, 2 स्टिचेस रह गई। अब आपने ये एक स्टिच बनानी है, फर्स्ट को सेकंड में से घुसा लो, बस ये आपने पूरी जो स्टिचेस है ना वो आपने यहाँ तक करनी है। So I'll see you after some time. So we're going to go in that next stitch. अब हम next stitch में जा रहे हैं, हमने next stitch पे करना, अब आपने yarn over करना है, you have to yarn over. Now you have these 2 stitches. अब आपने क्या करना है कि ये सिंपल है कि आपने फर्स्ट स्टिच को लेना है और दूसरी स्टिच से पुल थ्रू कर देना है, ये एक स्टिच बन जाए। ओके, नाउ यू हैव टू मेक 6 सिंगल स्टिचेस। अब 6 सिंगल स्टिचेस हम बनाएंगे तो ये हमारे पास 1 स्टिच हो गया, 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 आ गए। अब देखिए यहाँ पे जो हमने सेम स्टिच बनाई थी ना उसमें थोड़ा सा हमें नजर आएगा कि होल आ रहा है, उस होल के अंदर हमने डालना है थोड़ा सा ऐसे। अब आपने yarn ओवर करना है, 4 स्टिच से पुल थ्रू करना है, अब 2 स्टिचेस रह गई। अब हमने ये जो 4 स्टिच है इसे पकड़ना है और पुल थ्रू करना है सेकंड स्टिच से, तो हम ऐसे, ये हो गया। अब एक और एक दफ़ा दिखाती हूँ, फिर नेक्स्ट हम करेंगे pull, go through the next stitch, pull through the first, दो आ गई, अब take the first and pull through the second, और ऐसे कभी निकल भी जाएगा मगर प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने से उसके अंदर डाल लो। ये आपके पास दो स्टिचेस आ गई, इसको पकड़ो और there you have one stitch. Now make 6 single stitches. 1 2 3 4 5 6 सिंगल स्टिचेस हो गई। अब आपने सेम उसी के अंदर डालना है, देयर यू गो, और यहाँ से पुल yarn ओवर करना है, yarn ओवर कर लिया, 2 स्टिचेस रह गई। अब आपने ये एक स्टिच बनानी है, फर्स्ट को सेकंड में से घुसा लो, बस ये आपने पूरी जो स्टिचेस है ना वो आपने यहाँ तक करनी है। So I'll see you after some time. So guys, I've done like more than half, only a little bit is left, so I'll meet you after some more time. Now let's continue. This is so relaxing. It will get relaxing when you know get. So guys, this is a really relaxing hobby, but at first you'll think it's, what is this? You'll be like, oh, it's so hard, it's difficult. But when you get the hang of it, when you practice a lot, like it's my like 5th or 6th time I'm making this, then it gets relaxing. And you can, I'm just watching the TV, also knitting, and my sister is like, why are you knitting and watching TV? And she's like, I also want to learn. But when she did, she was like, no, I don't want to do it. She does not have that much patience. So you also need a little bit time, give it a little bit time, be patient, and try your best. That's it. And you'll, sometimes it will be like, oh no, I can't make it. But sometimes when you think that you can't make it, just leave it for some time, like 5 minutes, 10 minutes, do something else, drink water, relax a little bit. And then when you think you can do it again, then start knitting. It will be so good. I always do it. When I feel like I can't knit, I just stop it there
and when I feel like I want to knit, then I start again. Yeah, it's super cool. You don't have to like be, it's just a hobby. You don't have to force it on yourself. Just relax, and when you have the time and when you want to do it in that time. And it's really rewarding. You have beautiful things. You can make wheels, toys, or baby shoes for your brothers, sisters, cousins. There's a lot of things you can make. Blankets. Yeah, they're square things, squares, and when you join them, it becomes a big blanket. It's so good. And guys, look, I'm in love with this. Yes, I'm going to make hundreds of them and make a bow and tie them all together and put for decorations. It's so cool. And guys, don't worry if your turn out like this, because you can see it's blotchy. There are some things that are bigger at ends and some are smaller, some are unequal. So guys, I'm now at the last stitch, so I'm just gonna do the last stitch and then I'm gonna show you how to close up your project. So let's do the last stitch together. 3, 4, 5, and 6. Now we're going to go back in that stitch, and this will be the ending of our flower. So, and there you go. Now what you're gonna do when you have finished, you're gonna leave a little bit of a tail, like this much, because I like to tie it up when it's finished. So you're gonna take like that and tighten it. And you have another tail over here from our previous one. We're just gonna make a knot here like this and tie it tightly. Now what we're gonna take is, now we're gonna take our straw or a stick. If you're using a stick, you could color it, paint it, or just take a yarn, glue the end, take a green yarn, I'm just showing you, suppose this is a green, and just tie it like this and do it all over. But I don't want to do that, so I'm just gonna take a green straw. Now you're gonna need glue. It's really useful and it's come in handy all the time. I'm just gonna take some glue and sprint it all over like that. Close. And now we're gonna take the starting point of your flower, this point where we made like 4 to 5 stitches. You're gonna take your straw where you have put the glue. You're gonna just press it there for some time. Just take some and press it there. Okay? And you're gonna press it like for a minute so it sticks tightly and it does not get away, because you see the other, you can move this, but if you don't want, like, you can adjust it, make it a little bit, have some gap, but I like it when there's no gap in it, like this. So I'm just gonna hold it for a minute or maybe, and you see when I leave it, it's shut tightly. Now what you're gonna do is you're gonna take the line. You can see a line over here, this one. You're just gonna take this line and try to like this, and you just hold it like that and just rotate your straw. So it's gonna be a little bit hard, but it's okay. So you just want your line to go on the straw, not your petals or something. You'll have to rotate the straw like that. Just rotate it slightly, and don't worry if there's gap, you can fix it at the end. Just first put all your like that. I'm just gonna speed it a bit. As you can see, it's sometimes a little hard, but you just have to rotate it and it will be fine. In the line, the line you see over here, as you can see, it just has to be like across this on the straw so it does not get loose, and just rotate your straw like this. It's quite fun when you do it, and like that. Don't worry if the gap or if it is looking weird or something like that. It's okay. You can adjust it later. Just do it
And as you can see, it's a little bit hard to do at first, but when you get the hang of it, it's okay. It's super fun also. You just have to have a tighter grip on that. See, sometimes it will get loose. Just okay, now you're at the end and you have tied all your, and you have a lot of flour, but don't worry, when you pull it up, it will be smaller. Now you're gonna take the two ends. You could either glue it, but I like to do is take these two ends, roll it, and now I'm just gonna tie a knot or maybe two because I like to secure it down properly. And there we go. This is once. This is another. Now you just pull it up and see. Now you just pull it up a little bit with your finger and see, it's so beautiful. And I'm gonna just close one more knot over here. There you go. And now you could just cut the excess part. Just leave a little bit excess so it does not open the notch there. And there. Now you just take it, put it up, like push it up so it does not refuel itself. And guys, look at it. It's even better than before. I have now two. So don't worry, if you start like this, you'll end it like this. Yes, just try. You can do it. Yay! Bye bye. See you next time. I hope you like this video.